पहले जो हम राइड गए थे वो भी था KTMs के साथ, तो इस बार भी हम जाने वाले हैं KTM ऑफिशियल ग्रुप के साथ। Time is 7:15 and finally here we are. एंड आज का शेड्यूल भी थोड़ा बिजी है, तो ऑन द वे गोप्रो के फुटेज में बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। ओके, तो आज इट इज 15th अगस्त एंड इट इज ट्यूसडे। तो 15th अगस्त है इंडिपेंडेंस डे एंड आई विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज हम जाने वाले हैं 15th अगस्त की राइड पर। तो लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर वी वर इन हैदराबाद, तो इस बार वी आर गोइंग फॉर अ राइड विद द KTM ऑफिशियल्स। तो इससे पहले जो हम राइड गए थे वो भी था KTMs के साथ, तो इस बार भी हम जाने वाले हैं KTM ऑफिशियल ग्रुप के साथ। तो फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं स्काई ब्लू ऑर्चिड रिसोर्ट को एंड अभी द टाइम इज ऑलमोस्ट गोना बी 7 o'clock in 20 minutes। तो मीटअप टाइम था 6 को KTM राजाजी नगर में। आई एक्चुअली गॉट अप लेट, तो इसीलिए तो फिलहाल आई एम ऑलमोस्ट रेडी। तो आई एम जस्ट गोना वेयर माई राइडिंग जैकेट एंड फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एंड आज का शेड्यूल भी थोड़ा बिजी है, तो ऑन द वे गोप्रो के फुटेज में बताते हैं। तो फिलहाल लेट्स गो। Alright, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से एंड अभी द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 7 o'clock। तो इस बार वी आर वेरी लेट, तो लेट्स गो जल्द से जल्द। एंड आई जस्ट हैव वन ग्लव विद मी राइट नाउ बिकॉज आई नीड टू यूज़ माई फ़ोन एज वेल, तो इसीलिए। एंड मेरे ग्लव में असिस्टिव टच नहीं है, दैट्स द रीज़न। एंड अभी फ्यूल अप भी करवाना है। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग व्हेन वी गो उससे पहले ये फ्यूल अप करवा लेंगे, बट मुझे क्या पता था कि हम लोग लेट उठेंगे। आई जस्ट हैव 1 point लेफ्ट, सॉरी 2 points। 5 more minutes विल बी इन राजाजी नगर वाली शोरूम। Alright, तो अभी द टाइम इज 7:15 एंड फाइनली हियर वी आर। तो फाइनली हियर वी आर। Alright, तो फाइनली हियर वी आर एंड अभी द टाइम इज ऑलमोस्ट 7:30 एंड अभी हम लोग रुके हैं। अभी ये लाइनअप रुका है फोटोज़ के लिए, तो वंस द फोटोज़ आर डन वील बी हेडिंग टुवर्ड्स स्काई ब्लू ऑर्चिड। तो स्काई ब्लू ऑर्चिड है इधर से अप्रॉक्स 65 to 70 किलोमीटर्स। तो लेट्स गो। ऑलराइट, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं शोरूम से। तो फिलहाल वी आर ऑन आवर वे। तो टाइम इज़ ऑलमोस्ट 7:40, तो शायद से उधर पहुंचने तक इट विल बी 9:30 मोस्ट प्रॉबेबली, 9:30 या फिर 10, बिकॉज बीच में भी एक स्टॉप के लिए रुकेंगे। तो लेट्स सी। Alright, तो फाइनली अभी द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 9 o'clock। 9 o'clock, 9:30 and 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 9:30 and
9 o'clock and इधर पर all the KTMs have joined. तो the time is 9:15 right now and fuel up भी करवाना है. I just have 1 point left. तो बीच में ही कहीं fuel up भी करवा लेंगे. तो finally here we are for the fuel up Indian Oil में. तो fuel up करवाते हैं एंड फिर निकलते हैं. ये अभी the time is almost 10 o'clock. 10 हो चुके हैं and we are almost near Sky Blue Orchard. Just like 5-10 minutes दूरी पे हैं. That's it. And आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे बाइक्स थे कहाँ गए, बट थिंग इज़ हम लोग रुके थे. तो द थिंग इज़ हम लोग रुक गए थे फ्यूल स्टॉप के लिए एंड सभी लोग निकल गए थे एंड अभी कुछ 5-6 राइडर्स हम लोग जा रहे हैं. तो शायद से अब तक सभी लोग पहुंच चुके होंगे स्काई ब्लू ऑर्चिड. सो हियर इट इज़ मोर हाफ किलोमीटर एंड इधर पर ऑफ रोडिंग है. फाइनली हियर वी आर स्काई ब्लू ऑर्चिड. सो या एवरीवन's here. Alright, तो finally here we are at Sky Blue Orchid. So अभी we are just waiting for flag hosting and उसके बाद breakfast करते हैं. But it is really beautiful. Seriously, it's a beautiful resort. Just check it out. Alright, so finally we're done with our breakfast and everything and abhi the time is almost 11:30. So we are planning to leave from here already. So we are planning to leave right now. Just clicking some pictures. So let's get done and फिर उसके बाद निकलते हैं. Stay tuned. Alright, तो अभी it is almost gonna be 12 in like 7 minutes. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्काई ब्लू ऑर्चिड से एंड घर जाने तक इट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली 1:45 या फिर 2 o'clock. तो देखते हैं अगर ट्रैफिक नहीं मिली तो इट इज़ वेल एंड गुड. तो हम लोग जल्दी इसलिए निकल रहे बिकॉज आई हैव सम वर्क एक्चुअली. इधर से डायरेक्टली आई हैव टू गो होम चेंज एंड फिर उसके बाद फिर से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ अ फैमिली आउटिंग. तो फिर उसके बाद फिर रेस्टोरेंट भी जाना है एंड फिर उसके बाद HSR पे जाना है. तो टू गेट फ्यू थिंग्स फॉर आवर बाइक्स तो विल हैव टू गो देयर अगेन. सो लेट्स सी. आई डोंट थिंक सो कि पूरे काम आज ही हो पाएंगे बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. Alright, so we just entered the nice road toll and here we are. So abhi the time is almost 12:30, 1:90. Alright, so abhi the time is 1:40 and abhi we have entered the city and city में enter करते ही just look at the traffic. ऊपर से
me through, and on top of that riding gears. Oh my god. सिटी के लिए मोपेड इज बेस्ट. At least this route is better compared to that of Kormangla wala. ये मैंने गलत टाइम पे शायद बोल दिया. again हो गया. I'm tired, I'm really tired now. कि अब MG रोड में ट्रैफिक ना मिले. Just hope for the best. अभी 5 minutes में it's gonna be 2 o'clock. Right, तो फाइनली हम लोग आए थे उम्बा को. तो लेट्स हैव आवर लंच ओवर हियर. टाइम इज ऑलमोस्ट लाइक 5 o'clock, अराउंड 5 o'clock. तो लेट्स हैव आवर लंच एंड फिर Alright, तो अभी हम लोग आए थे GTR LSR में. तो फाइनली वी आर डन फ्रॉम हियर एंड अभी घर चलते हैं. Alright, तो फाइनली वी आर बैक होम एंड अभी द टाइम इज ऑलमोस्ट 8:30. तो फिलहाल आज हम लोग गए थे. आज इट वाज रियली अ टायरिंग डे बिकॉज सुबह एक्चुअली वी वेंट विद द KTMs एंड फिर उसके वापस आने के बाद हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट को एंड फिर उधर से फिर डायरेक्टली वी वेंट टू GTR पिट स्टॉप to purchase some products for our vehicles. तो GT के लिए मैंने purchase किया था Flash X and फिर bar and mirrors and Duke के लिए I purchased one camera mount and that's it. Most probably this Saturday we'll be installing the hazards for the GT. bar and mirrors भी install कर देंगे. तो फिलहाल it was really a tiring day. I'll just go and rest for some time. तो फिलहाल once again happy Independence Day to each and everyone. So फिलहाल let's end this vlog here. I hope you all enjoyed the video. Don't forget to like and share the video, and if you are new to my channel don't forget to subscribe and hit the bell icon to stay updated. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए. Stay tuned.